अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी मैंगो आइसक्रीम। मैं अपनी वीडियोस आज से उर्दू और इंग्लिश में करूंगी ताकि जो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर है उनको मेरी वीडियोस समझ आए। Hey guys, what's up and welcome back to another video. Today we are going to be making mango ice cream. From today onwards, I'm going to be making my videos in Urdu and English so that all my subscribers who are from Pakistan and abroad can understand my recipes and know what they are. So for this recipe, we're going to be needing what are you? Like, what? I'm speechless. You're doing your videos in Urdu and English. Yeah. Well done, sister. I'm proud of you. Okay, for this recipe, we are going to be needing 2 cup आम का pulp, 2 cups of mango pulp, 1 और 2 तिहाई cup condensed milk, also, which is 1 2/3 cup of condensed milk, 2 cup cream or 2 cups of cream, and a pinch of yellow food coloring or एक चुटकी yellow food coloring की ज़र्दा रंग की. So let's get on with this recipe. मेरे पास सारे अपने ingredients तैयार है और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने मैंगो का पल्प कैसे निकाला है मैंगो से. मगर पहले हम हाथ धोएंगे क्योंकि हमें कोरोना वायरस से सेफ रहना है. So I have all my ingredients here, but first I'm going to tell you guys how to take the mango pulp out like I have done over here. But before we do that, we got to wash our hands to stay safe from coronavirus. To dry my hands using a tissue. अब मैंने हाथ धो लिए और हम मैंगो को काटेंगे. तो पहले हम मैंगो को ऐसे काटेंगे. So first we're just gonna cut the mango like this. और फिर जब ये हम ऐसे काट लेंगे, हम इसके अंदर स्लाइस के अंदर तक नहीं काटेंगे मगर ऊपर से लाइनें बनाएंगे. So I'm not going to take the knife and like cut the whole mango so that the slices are made. I'm just going to make cubes so that I'm touching the surface of the mango's skin but not going through it. तो फिर जब ये कट जाएगा हम ट्रे को साइड में रख के चम्मच लेंगे और चम्मच से इसको scoop out करेंगे. So now this is cut, I'm just going to pull it out and I'm going to scoop the mango into my bowl over here. There. अभी मैंने अपना एक स्लाइस का गूदा निकाल लिया है. आपको 2 कप का मैंगो का पल्प चाहिए, इसलिए आप 3 मैंगोस को ऐसे काट के गूदा निकालेंगे. So now that I've taken the mango pulp out, we want 2 cups of mango pulp like I've taken out over here. So you're going to be needing to cut around 3 mangoes to get 2 cups. मैं अपना mango side में रखूँगी और I've set the mango aside and let's head on to the next step. आपके 3 आम कट जाएंगे तो फिर आपने इसको मशीन के अंदर बगैर पानी में चलाना है जैसे आप चटनी की तरह करते हो. फिर आपने छाननी में इसको डाल के 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है. Okay, so after you have cut 3 mangoes, you're going to put this in the blender until it gets this kind of consistency but without water like you do with chutney, and then put it in a sieve and put it in the refrigerator for around 2 hours. घंटे के बाद आप अपना मैंगो पल्प फ्रिज से निकालेंगे और फिर मेरे पास एक पतीली और या कोई भी आपके पास जो पैन है आप यूज़ कर सकते हो. मैंने इसको गर्म करने ऑलरेडी रख दिया है और हम अपने मैंगो पल्प को इसके अंदर रखेंगे. Now, after 2 hours, I've taken the mango pulp out of the refrigerator and I have a pan here already preheating in which we're going to put our mangoes into. अपना
चम्मच लेके इसको निकालूंगी और फिर इसको साइड में रखूँ और मैं इसको करूँगी. Now that I've taken the mango pulp out, I'm just going to use my spatula and mix it around. ये थिक हो जाए और आपको लगे कि पानी इसका निकल गया तो आप इसको चूल्हे से उतार देंगे. So when you think that all the water is absorbed and it's starting to thicken, then you're going to turn the stove off and head to the counter. से वापस आ गए और हम इसको ठंडा करने रखेंगे, मगर पहले हम इसको साइड में रखेंगे जब तक कि room temperature पर आ जाए. Now this is off the stove. I'm going to cool this, but before I put it in the refrigerator, I'm going to cool this down at room temperature. Set that aside. मैंने मैंगो पल्प साइड में रख दिया और अब हम अपनी क्रीम को whip करेंगे ताकि whipping cream बन जाए. So now that I've set that aside, we're going to whip the cream to make whipping cream. So I have my bowl here and हम इसके लिए एक blender यूज़ कर रहे हैं, मगर आपके पास अगर ये नहीं है तो आप हाथ वाला blender यूज़ कर सकते हैं. If you don't have a mixer like this, you can use a hand blender. That'll work too. So I'm gonna put my cream into this. अब मैं अपना 2 कप क्रीम इसमें डालूंगी और so now that 2 cups of cream are in here, I'm going to put this into my blender. मैं अपने इसको blender में डालूंगी और मैं इसको नीचे करके अपना switch में लगा रही हूँ. So I've just plugged in the switch and I'm going to whip this जब तक इसके hard peaks ना आ जाए. जब आपको लगे कि थिक होने लगे और इसका साइज डबल हो गया तो फिर आप मिक्सर ऑफ कर दोगे. So when you think that the cream is starting to get thick and it's starting to whip and has stiff peaks, then you're just going to turn the mixer off and set this aside. अब मेरे पास अपने सारे ingredients है. मेरा mango pulp ठंडा हो गया, मेरा condensed milk, whipped cream और ज़र्दा रंग. Over here I have all my ingredients: the cooled mango pulp, the condensed milk, whipped cream, and the yellow food coloring. First, हम ज़र्दा रंग mango pulp में डालेंगे. We're going to put the ज़र्दा रंग or the food coloring into the mango pulp. So I'm going to take it and just put it inside. फिर हम इसको चम्मच से mix करेंगे. And I'm just going to mix this with my spoon. और फिर जब ये हो जाएगा मैं इसको साइड में कर लूँगी. And with my other spoon, I'm going to put all the condensed milk into the whipped cream. Just going to pour it out. And मैं अब अपने सारे condensed milk whipped cream में डाल रही हूँ. तो फिर ये अभी ऐसा है क्योंकि अभी मिक्स नहीं है. फिर मैं अपने चम्मच के साथ इसको मिक्स करूँगी. Now I'm just gonna mix this with my spatula. Okay. जब ये मिक्स होने लगा तो फिर हमने मैंगो पल्प इसमें डालना है. तो पहले मैं अपना आधा डालूंगी. So I'm going to add in half of my mango pulp right now, mix it, and then add the rest in afterwards. Okay, now I'm just going to put the rest of my mango pulp in. अब हमारा सारा मैंगो अंदर पल्प है तो मैं अब इसको सिर्फ मिक्स करूँगी जब तक ये सबसे सही से मिक्स ना हो जाए. So now that all our mango pulp is inside, I'm just going to mix this until it's well incorporated with our whipping cream. And you want to make sure you're not mixing it like this, but you're folding it so that the airiness and lightness of the whipped cream does not escape from the batter. ये जब मिक्स हो जाए हम इसको कंटेनर में डालेंगे और ऐसी इसकी शक्ल होगी है. So now this is mixed, I'm going to put this into my ice cream container over here. And so I'm just going to pour this. Whoa, look at that.
looks amazing. अब ये हमारा हो गया और मैं इसको अब टैप करूँगी अपने काउंटर पे और ऐसे आपके सारे एयर बबल्स जो अंदर वो निकल जाएंगे और अब हम इसको फ्रीज़र में डालेंगे ओवरनाइट ताकि ये जम जाए. So now this is done. I tapped it slightly on the counter so that all the air bubbles escape, and I'm gonna put this in the freezer overnight so that it freezes. अब 12 घंटे हो गए जब से हमारी आइसक्रीम फ्रीज़र में थी और अब हम इसको निकालेंगे. Hey guys, it has been overnight since I've put the mango ice cream in the freezer and now I'm just going to take it out. Ice cream इधर मेरे पास है जो मैंने freezer से निकाली है. So here I have it, the ice cream. I've taken it out of the freezer. So अब मैं इसके ice cream scoops निकालूंगी और मैंने इसके ऊपर cellophane wrap लगाया था. So I've also put cellophane wrap. Well, I'm going to take it out in this plastic cup that I have here. मैं अपने इस bowl में निकालूंगी. तो मैं इधर चम्मच से और जब तक मैं काट रही हूँ तो बहुत आराम से निकल रहा है और ऐसे लग रहा है कि बहुत क्रीमी है और सब देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट भी है और इसमें पानी भी नहीं है. तो अगर आप इसको और ये this ice cream is very creamy as you can see, and there you have it, your mango ice cream is ready. And the good thing about this mango ice cream is that there's no water in it, so let's try it. Look at that. Whoa. It is so creamy, guys. ये इतनी creamy है जैसे इसमें पानी भी नहीं है. There's no water in it, and it's like amazing. And because we didn't put water in this, there are no flakes coming inside it, and that's a really bonus point. And it's just has a really soft and creamy texture. So I'll see you guys in my next video. Bye.